हाँ, बाप रे बाप। Welcome back, and what a comeback by Mumbai Indians. Back-to-back victories उनके नाम लगी, and what a brilliant over by Daniel Sams. Last over में सिर्फ 3 रन दिए जॉयदीप. गुजरात टाइटंस ने ये मैच मुंबई इंडियंस को दिया है. ये तो ऊपर वाला दे दिया. It's amazing that Tewatia, Miller, all these big hitters, Rashid, और बैट में बॉल लगा नहीं पाए. This is what is so fascinating about this game. You never know what's coming. Generally, Daniel Sams, to these guys, you would think match over. And in the post-match, Hardik said we shouldn't have taken it to the 20th over, especially with the start they got. How good were they? They were 10-82 required with 9 wickets in hand. That should have actually won with the canter, but that's how this game is. So intriguing. You never know what's going to happen. IPL is all about entertainment, और वो देखने को मिल रहा है. देवेशीज 106 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट, और उसके बाद आप 5 रन से हारते हैं. डैनियल सैम्स, जिन्होंने केकेआर के अगेंस्ट 35 रन खाए थे एक ओवर में, उसके बाद ड्रॉप हुए, लेकिन आज उन्हीं ने सिर्फ 3 रन दिए लास्ट में. आई मीन स्लोअर डिलीवरी डाली, यॉर्कर लास्ट में ट्राई किया, लेंथ बॉल पे बिलीव किया, पेस कोई नहीं दी. या स्पोर्ट इज अ ग्रेट लेवलर. ये फिर से और एक बार आज प्रूव हो गया, क्योंकि देखिए फॉर एनी स्पोर्ट्समैन देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि को केकेआर वाला मैच में उसने हरा दिया था मुंबई इंडियंस को, और आज उसने ही वाज टू गुड. हरा हुआ मैच जिता दिया. क्योंकि जैसे जॉयदीप दा ने बोला ना कि तेवाटिया, डेविड मिलर, राशिद खान, ऑन एनी डे क्लोज योर आईज, हार्दिक पांड्या, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन डैनियल सैम्स, आप 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप जीतेंगे. मगर आज क्योंकि बुमराह का जो वो ओवर में जब छक्का लगा, तभी भी मैं सोचा था कि चलो आज फिर से मुंबई हार गया, क्योंकि जब वो छक्का लगा 11 ओवर जब 19th ओवर में दिया, तब मैंने सोचा चलो ठीक है आज भी हार गया. बट देन दिस इज क्रिकेट. टर्निंग पॉइंट उनको कहेंगे आप. हार्दिक पांड्या का वो रन आउट, जयदीप 2 रन आउट हुए, राहुल तेवतिया भी और हार्दिक पांड्या. जरूरत नहीं थी 1 रन के चक्कर में वो मैच बनाया आपने मुंबई इंडियंस के फेवर में. जी, मुझे ये आप कह सकते हैं वो टर्निंग पॉइंट था, बट किसी का लगा नहीं. हार्दिक पे रहता शायद उसका भी नहीं लगता. ये नहीं कि एक आदमी का नहीं लगा, किसी ने लगा नहीं पाया. एक ने बेला चक्का मारा, टेवाटिया लगा नहीं पाया, राशिद लगा नहीं पाया, जो भी मिलर लगा नहीं पाया एंड में. सो बहुत कम दिखता है कि out of so many big hitters, none of them are being able to hit. So that happens quite often. It just goes to show that also with the slow ball, it was dipping. That was something that Malinga had, that dip, like a spinner का जो dip होता है. Even last ball full toss था, लेकिन dip कर गया ball. And that's a special quality to have, to be able to dip the ball. एक तो slower है, लेकिन वो जो आपका जो plain dip होता है, वो वाला आप सोच रहे हो कि इस जगह पे उसके नीचे गिर जाता है बॉल, वो बहुत डिफिकल्ट होता है पिक करना. आपको पता है स्लोअर आने वाला है फील्ड से, लेकिन आपको डिप का पता नहीं और कितना होने वाला है. नहीं तो एक्चुअली लास्ट बॉल फुल टॉस मिस हो गया. जी हाँ, ऐसा लगा कि वो यॉर्कर था, लेकिन वो यॉर्कर था नहीं, वो था फुल टॉस, क्योंकि वो ऑन साइड पे मारना चाहते थे. लेकिन I think the trend has been to bowl those wide slower balls inside the tram line, क्योंकि ये एक ट्रेंड सा हो गया, क्योंकि the bowlers these days I think they are always trying to bowl क्योंकि कई बार हमने देखा कि इस आईपीएल में क्योंकि वो वाइड स्लोअर बॉल इनसाइड द ट्रैम लाइन, तो कभी कभार होता नहीं है, इट गोज फॉर अ फुल टॉस और बैट्समैन उसको जस्ट टोंग करता है. मगर इस बार तो that's a safe ball because short third and pointer inside because the slower cover पीछे long off पीछे हो गया आपका. दो जो शॉट अगर लगेगा तो उधर, और अगर उधर से आप टानोगे तो लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, बट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द एंगल. ऑल्सो आपको लेवरेज नहीं मिल रहा है, बॉल दूर है. So that is the reason why if you can hike it from there and clear mid wicket, Duffy hat to you. But chances are not. Stump में करोगे तो बाहर जाने की ज्यादा चांस है, तो तुमको बाहर का बॉल उधर से you have to hike it from there. So chances of you coming through are less compared to if you bowl close to the stumps. Right. कई टीम्स ने प्लानिंग की थी और उसके चक्कर में वाइड्स के भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन आज की गेम पे बने रहते हैं. And रीमा जी, कभी-कभी ना वाइड करने से भी
the captain tells you no problem, because अगर आपको वो ट्रैम लाइन के इतना पास आपको डालना है तो थोड़ा वाइड हो सकता है. बिल्कुल. That's why often, even in domestic cricket, we'd go to a bowlers and the bowling coach says, no problem. दो wide over में no problem, but stick to your plans because this is the plan. Because wide पे एक रन मिलता है, स्टंप पे डालोगे तो छक्का खाओगे. Now get it right. Now get it right. So stick to your plan. You know, sometimes this has been often said that at the top of your run up, you should be in control of what you do. अगर wide हो गया तो वापस जाके वही बॉल ट्राई करो. Don't do anything else because then you are playing into the opponent's hands. और आपने फील्ड भी उसी तरीके से सेट कर रखी है तो वहां पे जी. रिस्क लेना बनता है. लेकिन आज जी. मुंबई इंडियंस जीती है, पहले तो ये सेलिब्रेट करना चाहिए. और दूसरा, बुमराह अभिजीत बुमराह नहीं चले आज. अभिजीत का और एक डांस आ रहा है, बिकॉज एक डांस तो डी है, वो नहीं आ रहा है, तो शायद अभिजीत ही दूसरा कर देगा. बनता है जब जब मुंबई इंडियंस जीतेगी तब अभी देवाशीष तो करेंगे नहीं, बट अभिजीत जरूर करते हैं डांस. लेकिन बुमराह की मैं बात करती, 4 ओवर्स 48 रन. सैम ने जो 3 ओवर डाले हैं 18 रन देके, बुमराह से उम्मीदें की जा रही थी. लेकिन आज जिस तरीके से साहा ने उनको खेला या जिस तरीके से नीचे आके बाकी बैटर्स ने उनको अटैक किया, मिलर ने भी, वो रिदम में बिल्कुल नजर नहीं आया. उसके बावजूद मुंबई इंडियंस जीतती ना तो ये बहुत बड़ी जीत कहलाएगी. देवाशीष जी बिल्कुल, क्योंकि जो आपने कहा कि साहा का इनिंग्स के बारे में, क्योंकि देखिए जिस तरह से द वे ही स्टार्टेड, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में लगातार वो अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं और जो स्ट्राइक रेट वो सेट कर रहे हैं, दैट सेट द टेम्पो. क्योंकि आज भी शुभमन गिल अगर आप देखें कि उतना फ्लुएंट दिख नहीं रहा था पहले, मगर इट वाज साहा हु स्टार्टेड द अटैक टू द, और खास करके वो छक्का जो उन्होंने बुमराह का खिलाफ लगाया. तो आई थिंक और इट्स गुड टू सी दैट शुभमन गिल आल्सो कमिंग बैक टू फॉर्म, क्योंकि वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप था दैट सेट द मैच. क्योंकि हमेशा से दे वर ऑन, they maintained a good strike rate, but then having said that, Mumbai Indians the crucial moment पे wicket लगा था, जो हार्दिक ने पोस्ट मैच में कहा कि losing wickets at regular intervals didn't help at all, and those last couple of runouts, successive runouts, that didn't help as well, क्योंकि हार्दिक तेवाटिया, 2 of your great gun batters जो लास्ट में जो चेस कर सकते थे वही आउट हो गए. तो ओवरऑल आई थिंक इट इज अ गुड विन. और खास करके रोहित शर्मा भी हमको बोलना चाहिए, आज ही आल्सो लुक गुड, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आई टोटली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड ही गो फॉर दैट शॉट. ही वाज प्लेइंग सो वेल, ही वाज लुकिंग, आज फ्लिक्स लग रहा था, आज ही वाज प्लेइंग द पुल शॉट, द कार्ड्स, तो हर एक ही लुक द रोहित वी ऑल न्यू, बट सडनली दैट रिवर्स स्वीप, वो मुझे भी नहीं पता चला कहाँ आज से आया था. ऊपर लेकिन वाला रीमा जी आज ऊपर वाला ने ये गेम दे दिया मुंबई को, बोला यू हैव बीन थ्रू अ लॉट इन दिस टूर्नामेंट, ये आपका बनता है. दे वर वन हिट ये अवे फ्रॉम लूजिंग द ऊपर गेम. वालों ने दिया वन है हिट या अवे. गुजरात टाइटंस ने खुद दिया है उनको? नहीं, आई थिंक गुजरात टाइटंस स्किल में दे फॉल्टेड, दे वर सेकंड बेस्ट इन द स्किल टुवर्ड्स द एंड. ये नहीं लगा कि उनका जो स्किल था, जस्ट इन दैट मोमेंट, इन दैट लास्ट ओवर, देयर स्किल टुक ओवर. You know, it's a game of skill, Rimaji. You and I have spent enough time, and Devashi enough time covering games for so all over the world. He knows ultimately it's a game of skill. और आज skill में end में just a little bit better was Mumbai, just a little bit better. Touch and go, but one hit away from winning the game. एक चौका मैच जिता देता actually बीच में. एब्सोल्युटली छक्का भी नहीं, एक चौका मैच जिता था, फिर सिंगल का गेम बन जाता. और गुजरात टाइटंस ने पिछले जो 5 मैच जीते थे वो चेस करके ही जीते थे, 20वें ओवर में ही जीते थे. और पिछली बार तो 2 बॉलों पे 2 छक्के चाहिए थे तब तेवतिया ने मारा था. आज सिर्फ 9 रन That's चाहिए थे, लेकिन यही तो that's what कहानी है Hardik ना. said. That's what Hardik said. We have won much closer games. This one got away from us, but we learned from this. Yes, we were not good enough. Our batters let us down. But we've also, from hopeless positions, won games because of these batters only. कोलैप्स हम बेसिकली मॉर्निंग स्टार्टिंग में देखते हैं जयदीप, लेकिन आज बाद में जो कोलैप्स है, क्योंकि जब मैं स्कोर कार्ड देखती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहाँ पे आप हारे. लेकिन जब स्टेटमेंट सुनती हूँ हार्दिक पांड्या की, रेगुलर अगर विकेट जब गिरता है तो वहां आप मैच हारे, क्योंकि आते ही मारना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली अगर स्लोअर डिलीवरी आ रही है तो. जयदीप Yeah, absolutely. देखिए, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत अगर बॉल खेल लिए हो, that's why I'm saying Miller का लगा नहीं, although he was set. That just goes to show how good the skills were. That's why I'm harping on skill. अगर दोनों 0 पे रहते या 1-2 पे रहते, मैं बोलता यार वो सेट नहीं थे, लेकिन सेट बैट्समैन को भी मारने नहीं दिया. So that's where I felt
that even with Miller's hitting skills, he came out second best today. So today was Daniel Sam's day, and you just doff your hat to him and say, well done. तो आज हम कहेंगे कि मुंबई इंडियंस एज अ टीम बाहर आई है, एज अ टीम क्लिक किया है। देवाशीष, मुर्गन अश्विन आज And खिलाए थे, उन्होंने भी did you see the emotions, Rima ji, after the win? लग फ्रॉम रहा था रोहित क्वालिफाई शर्मा, कर रहा है. रोहित शर्मा वाज सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग। Rohit, Ishan, Surya, Ranveer Singh in the stands. This just goes to show the pride. जो हम पहले pre-show में बात कर रहे थे ना, what are you playing for? And in they saying Daniel Sams ने कहा उनको इंटरव्यू में कि we are having a mini IPL कि 5 गेम में देखते हैं हम कि 6 गेम बाकी है हम लोग कितना जीतते हैं. Because you got to narrow your vision down right now. Because no point saying we're going to call it. That's not going to happen. देखो इसमें एक टूर्नामेंट बना के देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. इसमें कौन हाईएस्ट विकेट टेकर है, इसमें कौन हाईएस्ट रन गेटर है, इसमें किसको कितना मैन ऑफ द मैच मिलता है, कुछ बनाओ इसमें से. और बना सकते भी हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इस टीम के पास दमखम है और आज जिस तरह से परफॉर्म किया है, मजा आ गया देख के। मुर्गन अश्विन की बात करी थी देवाशीष, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं एक ही ओवर में, वहां पे भी उन्होंने गेम को पलटा था। सो ये चेंजेस हैं आज फेवर में काम किए हैं मुंबई इंडियंस के। एंड 428 429 428 Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, and he picked those 2 wickets of Shah and Shubman who was looking good. batters का Set batters 50 हो गया. They were batting as if taking the match away from the opponents. और उसी time पे I think that paved the way somewhat for Mumbai Indians. Of course, it was the first step that brought them back into the game. And there's those later on those 2 wickets of Hardik and Tewatia. So I think Murugan Ashwin, it was a good move क्योंकि ऋतिक शौकीन हम सब डिस्कस कर रहे थे इसके उन्होंने तो कुछ गलती नहीं की शायद. It was just a plan that they wanted to play a leg spinner in the Murugan Ashwin and he delivered for them, and that's a good move on the part of the Mumbai Indians management. And what I'm going to say, Rimaji, is music to you, your ears. I will never drop a leg spinner from my team. I will never drop Murugan Ashwin. Totally agree with you. Because he's a wicket taker. I'll fit in Shaukin some other way. I will never drop a leg spinner from any team, whether it's Chahal, whether it's Bishnoi, whether it's Shahar, whether it's Murugan Ashwin, whether it's Piyush Chawla, whether it's Amit Mishra, because they are wicket takers for you. आज उन्होंने मैच जिताया. 2 बैट्समैन 50-50 में खेल रहे 28 बॉल में, उनको दोनों का आउट करके आपके मैच में लाया और सबका पिटाई हो गई. उसने 4 में 28 दिया. And he is not full of confidence also because he didn't play the last few games. एक आधा गेम में उसका 40-50 जाएगा, लेकिन जिस दिन उसका बॉल गिरेगा, which will be 70-80% of the games, आपको वो contribute करेगा. मैं कभी भी ये बॉलर को ड्रॉप नहीं, no matter who they are. सेम यार जयदीप, मुझे भी लगता है कि लेग स्पिनर आपका मैच विनर होता है. कभी-कभी पिटाई भी होती है, लेकिन जब वो लय में नजर आते हैं, जब वो two things. One is that because they can turn the ball on any wicket, that's one, because it's a wrist, not finger. 2 is because the variations they have because of their action. Only these 2 things. If they're good enough to be here, which all the names I mentioned over here are, then they bring which no finger spinner brings. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेग स्पिनर की अपनी जगह बनती है और मैं आपके साथ बिल्कुल हूं. जयदीप, इस पे आपके साथ रहूंगी. And the highest are who? Amit Mishra highest. Second Piyush Chawla. Why? बिल्कुल लेग स्पिनर है, देखिए लेग स्पिनर काफी है, वो हमेशा हाई रहते हैं. लेकिन आपके पास ही रहूंगी. मुंबई इंडियंस की बैटिंग पे आते हैं. आज कलेक्टिव एफर्ट दिखा, अच्छी शुरुआत दिखी. ईशान किशन अच्छा खेले. रोहित शर्मा पहली 10 बॉल में प्योर टाइमिंग. फॉर्म की तो बात ही नहीं है, ये सिर्फ कन्वर्ट कैसे करेंगे आप अपने स्टार्ट्स को, सारी कहानी वहीं पे है. इतने बढ़िया टच में नजर आए. फिर जैसे देवाशीष ने कहा था, ऑल ऑफ ए सडन आपको लगा कि आप ऐसे हटाने वाली शॉट्स खेल सकते हैं. सामने इतनी बढ़िया शॉट्स खेल रहे थे. That wasn't needed, Rimaji. Jolly will also agree that wasn't was needed. not needed. But Shami का जब पैडल मारा छक्का हो गया, that was also not needed. बहुत तो छत पे गिरा, तो वो needed हो गया. Success, everything is success. See, I agree. Right. आप कभी देखे हुए फास्ट बॉलर को लैप मारते हुए फर्स्ट 6 में रोहित शर्मा को? मैं तो कभी नहीं देखा. लेकिन उन्होंने मारा बहुत रेयर देखने को मिलता है. और रीमा जी वो बॉल लेंथ वाला बॉल था, ऑन दी अप मारा. ये नहीं कि वो क्लोज हाफ वॉली था. जनरली क्लोज हाफ वॉली को जो बटलर जो अच्छा मारते हैं वो फुल बॉल को मारते हैं. समी का लेंथ बॉल 140 प्लस में टाइम किया, छत पे गिरा जाके. So I think रोहित थोड़ा आज खुल्लम खुल्ला खेल रहा था. That is the reason why I think he tried that shot. उसका माइंडसेट से लग रहा था आज
ऐसी की तैसी. This way or that He was, way. yeah, this way or that way, because he's done enough. See, he's frustrated as a captain, as a batter, and we've all been through the when he say, "बहुत हो गया यार, आज तो ऐसी की तैसी." And that went, देखा the जाएगा जो होगा. wicket, yeah, wicket was beautiful, didn't seam around much, so the conditions were also conducive for batting. But you were talking about Mumbai Indians batting. I was a little disappointed with what followed from after the openers. I thought the others could have built on it. You know, this is a 20-run shot. जीत गया ठीक है, Yeah. 20-25 रन पहले के बाद मारी नहीं हुआ. हाँ, बाद में आके हमारा प्रांतिक मजूमदार, सॉरी, टिम डेविड ने कुछ मारा, बट besides that, in between Surya, Pollard, you know, we could have been at least एक साइड से मार हुआ खाली टिम डेविड का आफ्टर द ओपनर्स, दोनों साइड से होता तो और 20 रन बनते. बिल्कुल, और बनने चाहिए भी थे, जिस जगह से शुरुआत हुई थी और जिस लेकिन खत्म बड़े अच्छे से किया टिम डेविड ने जो शॉट्स खेली. अब कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में चर्चा हो रही होगी, यार क्यों नहीं खिलाया इनको देवशीष. ये वो प्लेयर हैं जो अब तो सारे गेम खेलेंगे, लेकिन पहले खेलते तो ना एक दो मैच आप जीते तो अभी आप प्लेऑफ की लड़ाई में शामिल होते. प्रांतिक मजूमदार तो ये Absolutely. बोलते बोलते झंडा लेके सैन फ्रांसिस्को चला गया कि टीम डेविड हमें. Yeah, they must be ruining the fact that they did not play Team David right throughout the IPL. क्योंकि देखिए, एक तो obviously one of the main reasons for Mumbai Indians is that they could not find the right balance right from the match number one. क्योंकि हमें पहले शुरुआत में उन्होंने 4 फॉरेनर्स नहीं खिलाया. They went into few matches not playing their full quota of 4 foreigners. फिर अल्टीमेटली 4 फॉरेनर्स पिक करते करते दे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट वाज ओवर फॉर देम. तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन. और टीम डेविड, क्योंकि आपने उसको लिया ही उनका टैलेंट और पोटेंशियलिटी देख के. क्योंकि उन्होंने जैसे परफॉर्म किया इन बीबीएल, पीएसएल, ये सब टूर्नामेंट, ये सब बिग, ये सब फ्रेंचाइजी लीग देख के उनको पिक किया. एंड देन सडनली यू ड्रॉप हिम आफ्टर 2 मैचेस व्हिच डिड नॉट जस्टिफाई उनके. शुक्र है कि टीम डेविड में अच्छा किया, क्योंकि एनी बैट्समैन अगर अचानक उसको बैठाया जाता तो दैट कुड हैव हर्ट हिज कॉन्फिडेंस. बट ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि उसने अच्छा खेला. एंड ही हैज शॉट्स, टू प्ले इन दिस फॉर्मेट. And also on this, Team David did not come and score 40 ball 45 कि मैं अगला मैच खेलूं. वो अपना गेम खेला. Absolutely. Because often when you get dropped after 2 games, मैं तो आके भाई अपना रन बनाता हूँ कि अगला मैच खेलता हूँ. 2 मैच का अपना नाम पे पेपर में नाम लिखाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगला मैच के मैं तैयारी करता हूँ. So it's kudos to him that he came and played his game. And now they are ruining the fact that why did we chop and change so much? You know, and very unlike Mumbai, Chennai, Rima जी ये chop and change करने वाले टीम है नहीं. करते हैं नहीं. देखिए पोलार्ड को अभी तक आपने पोलार्ड को अभी तक चेंज नहीं किया, लेकिन क्या जयदीप, इट्स हाई टाइम टू चेंज पोलार्ड. 14 बॉल्स 4 रन स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और जिस तरह से राशिद खान ने उनको सेटअप किया, वो विकेट बनाया था उस ओवर में, लग रहा था अब आएगी और आ भी गई. Yeah, we've spoken about it enough. You know, midway through an IPL, he's given up the West Indies captaincy with the T20 World Cup around the corner. I think he's also realized कि मेरा टाइम शायद हो चुका है. Outstanding player, great servant for Mumbai, but it'll be good to see him in the support stuff. And I would also like to add here the Rashid Khan means he has been the bowler for Gujarat Titans tonight, picking those 2 big He's the bowler for whichever team he plays for. Match winner. He's a match winner on any count. Be it his batting, and his bowling, batting, fielding, what commitment, diving. Yeah, absolutely. क्या बंदा है यार, क्या, I mean on the ground, you see his commitment. You know, दूर से जा रहा है, full length dive देखिए, कभी सोचता नहीं है मेरा शोल्डर खुल गया तो मेरा टीम का क्या होगा, मेरा अगला क्या है, ये एसएल है, वो एसएल है, सोचता ही नहीं है. ऐसे जाता है कि ये जिंदगी का लास्ट बॉल है उसका. आउटस्टैंडिंग आउट क्रिकेट. Love the guy. और ये ऑफ द फील्ड भी अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. मेरी इनसे बात होती रहती है तो ये बताते हैं कि अपनी फिटनेस पे ये बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि डिफरेंट जाते हैं. रेमा जी 23 साल उम्र है. 23 साल उम्र में आप कितना फिटनेस, आपको भगवान सब दिया हुआ है, कुछ नहीं चाहिए. उस टाइम में तो what you're saying I agree, but what I'm saying, अगर आप डिफरेंट लीग्स में जाके खेलते हैं ना, तो अपने आप को फिट रखने के लिए, स्पेशली इस लेवल पे इतनी हाई इंटेंसिटी गेम, आप बीबीएल में खेलते हैं, आप सीपीएल में खेलते हैं, आप आईपीएल में खेलते हैं, आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं. सी आपको निगल्स आते हैं, फिटनेस इश्यूज आते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अपना प्रॉपर ध्यान रखता है और यही आपको चाहिए. रीमा जी सब सोचते हैं 40 ओवर का गेम है, 20 ओवर फील्डिंग करना है, लेकिन कभी कभी ये 20 ओवर डेज क्रिकेट से ज्यादा होता है, बिकॉज द इंटेंसिटी इज सो मच. एग्रीड.
You have to dive around. You have to be every ball. You're running full pelt. 20 overs खेलने के बाद लगता है, 50 overs से भी ज़्यादा, because the intensity of the game. You cannot relax. You can't go to fine leg. You can't take a breather. You can't come out. There's nothing you can do. It's like a bullet train. Hour and 20 minutes, hour and 30 हो गया, चलो. Hour and 30 minutes and you're done. But that one, it's almost like a soccer play. You're always on the move. Like in soccer, 90 minutes, you can't relax. Over here also you can't relax. कभी भी आ सकता है, game changing moment. He's a live wire. He's a live wire. Love the guy. Yeah. Love his commitment. I mean, just the way he plays. See, good day, bad days, not in your hands. But the way he shows up every day with the commitment that he comes, superb. कमिटमेंट लेवल भी नंबर 1 एंड इज अ वंडरफुल जेंटलमैन। लेकिन आज sure. दिन रहा मुंबई इंडियंस का। गुजरात टाइटंस के आगे क्यों लिखते हैं रोज, लेकिन वो फिर लास्ट में आके हटा देते हैं। लेकिन अब गुजरात टाइटंस को बैठ के सोचना होगा कि आप 20वें ओवर तक मैच ना लेके जाइए, क्योंकि हर बार कहानी आपके पक्ष में नहीं जाएगी। सो ये तो था आज का मैच। अब कल की थोड़ी बात जी, करते ये हैं। वन ऑफ था। ये वन ऑफ था। इतना क्लोज मैच जीते हैं, ये वन ऑफ था। इसको भूल जाइए। जैसे वो 111 ऑल आउट और 95 ऑल आउट हम बोलते हैं ना, इसको भूल जाइए। लास्ट 10 बॉल में एक बाउंड्री नहीं होगा, नंबर 5 एंड 6 बैटिंग में बहुत कम होता है। ये हो लेकिन गया एक सामने दिन, कौन भूल सी जाओ। टीम आपका लक लेके आ जाएगी उसका भी कोई भरोसा नहीं है। बेटर है पहले ही वो खत्म भी तो कर है। दो। खत्म करो। पहले बिल्कुल, क्योंकि 4 में घुसो, फिर 1-2 का सोचना। बिल्कुल, पहले नाम बिल्कुल। का, और आप जैसे कहा, पहले नाम के पास क्यों लगाओ। पहले नाम के पास क्यों Q1, लगाओ, बहुत Q2, इंपॉर्टेंट Q3, है। Q4, Q1, Q2, Q3, Q4 बाद में होगा। क्योंकि ये ऐसी टीम है जो सबसे पहले क्वालीफाई करेगी, सिर्फ 2 पॉइंट दूर है, लेकिन 2 बैक टू बैक मैच हार भी चुकी है। लेकिन मुंबई इंडियंस के फैन है तो आप खुश हो जाइए, आज रात सेलिब्रेशन बनता है। सो अब कल पे आते हैं। कल है सुपर सैटरडे, यानी कि डबल हेडर। सो जो पहला मैच है, आफ्टरनून मैच, वो है पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और उसके बाद लखनऊ सामना करेगी केकेआर का। तो कल जॉयदीप का दिन है, लेकिन पहले मैच की बात करते हैं। पंजाब किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स पिछला मैच हारी थी मुंबई इंडियंस से। जॉयदीप, मैच अच्छा होने वाला है। ये मैच होने वाला है वानखेड़े में। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? Yeah, I still feel that I'm going with Rajasthan for just their firepower. But the only worry of mine is if Josh Butler gets out early, then their batting is not tested. I'm not so sure. There's too much of responsibility on him. Suddenly, when he gets out, their batting looks very thin, very bleak, very fragile, very unweighty. All of a sudden, if he sticks around, even if he sticks around, gets a 60 ball 75, job done. But when he is inside in the dugout and the other people are batting, I just can't see the weight. सेम गोज फॉर पंजाब किंग्स देवशीष, क्योंकि शिखर वहां धवन, पे शिखर धवन चलते हैं तो स्कोर वही मैं बोलने अलग ही जा रहा जाता था है। कि एकदम शिखर धवन। But the only difference in them is Shikhar Dhawan's game is a little more chancy than Josh Butler's is. I know इस साल Josh Butler का चल रहा है and everything is falling in place. But if Josh Butler was, because he takes a little more chances, that's why he's not as consistent as Shikhar is through the seasons, not this year. If you see Shikhar in the last 5-6 years and Josh Butler in the last 5-6 years, no comparison. Shikhar is streets ahead. Yeah, that's because the route that Shikhar takes is a little more safe. At the end of the day, the difference of maybe 10 or 15 strike rate पे एक 140 होगा, 160 होगा, लेकिन consistent उसका लिए he gives that up for the consistency, for the 500 runs every season. So जयदीप तो है आरआर के साथ। देवशीष, आप? आरआर, I will also go with आरआर, राजस्थान रॉयल्स। सो मैं चली जाती हूँ पंजाब किंग्स के साथ। एक तो साथ देना बनता है यार। सेकंड मैच पे आते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, जो खेला जाएगा पुणे में। पहले आपके पास आते हैं देवशीष, क्या लगता है? Lucknow Super Giants will be the favorites. Just because the balance of the side, KKR did show some promise last match, but then I would still go. Means obviously दिल से तो KKR का ही supporter हूँ. ये दिल से मैं बोलने वाली थी, KKR के fan I है। have no qualms in accepting कि I'm a diehard KKR fan, but then I would say Lucknow Super Giants are the better side. I would support. And Devashish, the way that KKR played the last game, it augurs well. Right? Thank you. KKR is very not consistent though. But it augurs well that they played the last match well. Let's see. Yes. So Lucknow Super Giants for Devashish Sen, और आपके लिए जयदीप? Yeah, obviously KKR, but I feel Lucknow Super Giants are the favorites because
I think if KKR bowl well, then they have a chance because their batting is fragile. Last day भी उतना ज़्यादा total नहीं था. I don't see them chasing 175, 180 and winning. 155, 160, 150 तक रख पाओगे. कभी-कभी हो सकता है. You know, Sunil Narine has a good day. Umesh has been in the form of his life. You know, Pat Cummins hopefully comes back and bowls a dream spell 4, 27, 3. You know, Hopefully comes so back. yeah, hopefully first comes back and then bowls. Yeah, right. So yeah, but I just feel that my problem is if if the bowlers have an off day, then problem. Also, if KKR bat first, problem. I always feel KKR bowls first, has a 153, 154 target, and then the batters get there. That is the best way for KKR this year, the way the team is placed now. Obviously, I think definitely it will be the Lucknow teams that's the favorite. There's no doubt about it. But sometimes, you know, even KKR backs to the wall like Mumbai, nothing to lose, very little chance of qualifying. खुल्लम खुल्ला जब खुल्लम खुल्लम होता है ना कुछ भी हो सकता है जैसे हम आज देखे कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, स्पेशली अगर आपके पास इतने डेंजरस प्लेयर है, श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, तो कल होगा डबल हेडर, देखते हैं कौन जीतेगा, लेकिन कल सुपर सैटरडे जी डेफिनेटली आप तो बनता लखनऊ है। में हैं आप मैं तो तो लखनऊ में हैं लखनऊ, बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ गौतम गंभीर हो गए, जहाँ दिल्ली के वासी होंगे, वहीं पे हम निवासी होंगे। सो देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी के लिए टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो एट 3 पीएम। फर्स्ट डबल हेडर है ना, थैंक तो दोपहर को मिलेंगे। थैंक Thank यू you, गुड नाइट, रेणु जी Himanshu. Good थैंक यू night. थैंक यू। देवाशीष Thank you, गुड नाइट Joydipda.